वज़ीर ख़ज़ाना इशाक़ डार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Just 4 years ago was somewhere different. In 2013, Pakistan was a macroeconomic unstable country, declared globally and predicted to be going in default within 6 to 7 months, no matter which political party would win. I'm reminding you, February 2013, election took place. pmln got the, they were lucky to win the election, and we had the responsibility to fix that macroeconomic unstable economy of this country. It was double-digit inflation, it was high interest rates, it has a rupee which was shaking, and it had very low forex reserves. And the GDP growth of the average previous 5 years was less than 2%. That's the state of economy Pakistan was in 2013. Then we took the responsibility. We started off, and where did we reach? First of all, within 5 days, we presented the budget. I remember the Prime Minister taking oath on 5th of June 2013 and the Cabinet taking oath on 7th of June 2013. Within 5 days, we managed to present the budget. Obviously, I was working since we won the election in May, but I was not visiting the divisions, and so all that formal process had to be done after I was sworn in. For my preparatory work behind the scene, yes, I was doing it. Within a month, we didn't waste time. Once the budget was approved, within a month, on 4th of July 2013, we signed the IMF agreement. If you are in such a state of economy, and you still decide कि मैंने खुदकशी करनी है, कि मैंने अपना इकोनॉमी को ठीक करना है, मैंने IMF जाना है, कि मैंने दोस्तों के पास जाना है, this is too slow and too unfair treatment to the nation, I would believe, and the economy particularly. So where did we reach in 3 years? I don't want to walk you along all the distance we covered. Within 3 years, the whole world was acknowledging Pakistan progress in economic, and they were praising. Your ratings went up, and by 2016 and 17 fiscal year, we had low inflation, 4% CPI. We had food inflation 2%. We have stable currency of 104. We inherited at 100 rupees, and it went short up in the beginning to 111. We had 24 billion of foreign exchange reserves, including State Bank with $18+ billion. We had growth at around 6%. Now, these things are music in the developed world. If you perform, but we are always ready for political instability in this country. What was the projection of the PricewaterhouseCoopers, which is unchallengeable, that Pakistan would be 18th global economy by 2030? And Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. Now, this was the Pakistan destiny. I wish the political parties of this country should have worked together, hand in hand, and reached and shortened that 2030 journey. In 2016, we could have easily made 2026, 27, but provided we had worked hard together. I remember presenting the budget 2013-14, and I kept saying that let's have Charter of Economy. Fiscal year 2015, let's have Charter of Economy. Each year I was presenting 3-year, medium-term macroeconomic framework with the budget for the fiscal year. What else can one do? But as I said, all that dream shattered. We had dramas of Dawn, dramas of Panama, and we ended up at a point where Pakistan now is predicted recently 54th economy in 2034. It is, it breaks my heart, and I feel so upset कि पाकिस्तान की किधर थी इसकी जगह और हम किधर जा रहा था, पाकिस्तान किधर चला गया. बहरहाल, this is what has happened to this country. I don't want to criticize, I don't want to go into, but I'm just flagging the facts which are documented globally. Nobody can deny, within and outside Pakistan. Behral, we have seen where we are now. We are having trouble right, left, center. We are again back to macroeconomic challenges Pakistan has been facing. And as a consequence of that, you saw that there was a constitutionally moved, a vote of no confidence succeeded, and a new government of
political parties, PDM plus others, was formed. They had very serious challenges. They have been trying, first of all, to rescue Pakistan from a default, which they have done, but at a very high political cost. And I think it is worth it. If the choice is the Riyasat and Siyasat, I think Riyasat should take the priority, not Siyasat. मुल्क है तो सियासत होगी ना जी, मुल्क नहीं है तो सियासत कौन सी होगी? और हमने देखा कि हम जहां पहुंच चुके हैं, अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. Let's be honest. और I believe that you can play your role, everybody can play a role. Everybody is as important as the Prime Minister or any of the ministers. So challenges were deep, but unfortunately the devastating floods, the catastrophe you have been through as a country, that has really, created multiple challenges for Pakistan. I will come to the floods later, but let me just share with you. I would like to clarify a few things which have been talk of the town, and I've tried to clarify it in Washington, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, APP, APF, etc., etc. There has been a talk of Pakistan that we would go to Paris Club. Paris Club is where you go for rescheduling of your loans, and the members of Paris Club are World Bank, IMF, IFC, IBRD, Islamic Development Bank, Asian Development Bank. All these would be part of the multilateral, what we call donors or partners or lenders to Pakistan, any country. I think as a professional chartered accountant, I did not second it when I joined just about 3 weeks ago. I had convinced, I have shared it with Prime Minister, it is not the right thing. I'm sure you all deal with your clients, industry, trade, business. It doesn't send a good signal. We should be able to deal with our liabilities and with our responsibilities without going to Paris Club. So my first announcement after I took office on 28th of September was, we will not go to Paris Club. The second thing is, our bonds are maturing $1 billion in December this year. There was a huge speculation in the international financial markets that Pakistan will ask for force majeure extension in the maturity date of the bonds. I think religiously, morally, and contractually, we should do our best to meet our obligations on time. Only then you will have, the credibility, integrity in the Committee of Nations. मुझे याद है कि उस वक्त भी मुझे बताया गया जी पेरिस क्लब हाजिर है और जब 2013 में हमने लिया तो उधर जाएं ये करें. मैंने कहा कहीं नहीं जाना. We will take the program, we will work hard, we will change the direction, we will stop the damage, and then we will go to the international the bond markets and the international secondary market. We did it. April 2014, after almost 9 months, when we went to after the words, witnessed what we were doing. The word witness what Pakistan was performing. Kidhar gaye hum? We offered our bond $500 million. We were 14 times oversubscribed. It was a rare achievement which a country can have in the international bond market. I remember after the road shows and this conclusion of that issue of bond in New York, I had to attend the spring meetings of the World Bank IMF. There was nobody who wouldn't compliment me, who wouldn't congratulate me on behalf of Pakistan. So see, हमें उस तरह का रिजॉल्व चाहिए अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है. ये तो घिसा पिटा है कि जी ठीक है पेरिस क्लब चले जाएं, बॉन्ड इधर कर दें, उधर कर दें. So I don't believe in it. Third speculation, since you are all professionals and nothing, as sharing these things with you would obviously spread to a large number of professionals. Third thing was that, knowing me, I would renegotiate IMF program, which in my opinion should have been different. I personally believe again, the sovereign commitments must be honored, whether any government, PTI, PPP, any government. So, शायद मैंने negotiate करना होता तो मैं कुछ और करता, yes, लेकिन it is not good that with a change of guard and change of government you go and say कि नहीं हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं है. Especially you are only eight months away from the program conclusion if we do on time. ये program तो वैसे ही खत्म हो जाना, अब तक खत्म हो जाना चाहिए. 2019 में शुरू हुआ, लेकिन the only program in the history of Pakistan which was concluded was under pmln when I was finance minister. Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. That was the only time Pakistan is known 3 to 4 trenches country.
अप फ्रंट लोडिंग, पैसे लिए, तीन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्वार्टरली किए और फिर खुदा हाफिज कर दी. So first time Pakistan completed IMF program and we got recognition globally that we are now a serious country to be reckoned with. That was 2013-16 program. If you recall, दुनिया के multilateral जो heads थे of the donors, Dr. Kim, World Bank president, Shri Buliani, the CEO of World Bank, who later became finance minister of Indonesia, who was followed by Christina, जो इस वक्त है MD IMF, she replaced Shri Buliani in World Bank. Christian Lagarde was the MD IMF, she came to Pakistan. In this very city, all these people, twice Asian Development Bank President Nako came, Mr. Jin AIIB of China, he came. Everybody came on my invitation because they were seeing Pakistan is performing. Pakistan is the future. Pakistan is going to be 18th economy of the world. So now everybody would like to business with you. अगर हम खुद जाएंगे बाहर, तवाई हमारे अपने हाथों से की होगी और हम जाके कहेंगे मैं मसलन जाऊं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खिताब कर रहे हैं और मैं कहूँ मेरा मुल्क डेट ट्रैप में है, तो कौन ओनली को पागल ही आएगा कि आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करें? I mean, you are bad mouthing your country. I mean, if you are 70s में अगर आपका debt to GDP, what's a big problem? Why we are maligning our country internationally and globally? Japan is 257% debt to GDP. America is 110% debt to GDP. UK after COVID 101% debt to GDP. I can name and point out number of developed countries. लेकिन हमने कसम खाई है कि अपने मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंचाना और जाके ग्लोबल फोरम से बोलना ये जो कुछ हो रहा है ये दिस इज अनयूजुअल एंड यू पीपल एज प्रोफेशनल शुड हैव बीन फ्लैगिंग इट एंड क्रिटिसाइजिंग इट कि पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे चलो सब पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग पीएमएलएन. बट आई थिंक यू गाइज हैव नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी एज प्रोफेशनल्स. आपको ये टाइम मुल्क के लिए देना चाहिए. दिस कंट्री हैज गिवन all of you and me also this recognition that we have we have been privileged to the extent कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में ये मुकाम बख्शा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तो इंग्लैंड से पहले किया, फिर मैं यहाँ का मेंबर हुआ 70 और यूके में 75. I was director of finance in UK when I left for Libyan government picked me to set up their Auditor General of Pakistan, Auditor General of Libya, the external audit segment तो उनका अरबिक में था, इंग्लिश में नहीं था. So 6 chartered accountants from England was hired, and I was one of those. We set up those. I audited Occidental, Movil, Marathon, all these companies during my 14-month stay there. तो बात ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी. पैसे माशाल्लाह ये सीनियर लॉर्ड जो बैठी है तो ठीक ठाक बना ली है माशाल्लाह. They have financial consolidation. You don't need. Please do contribute your share. You can do in multiple ways, and I think you should. इट इज़ आवर ड्यूटी. मैं तो उसी पैशन और उसी इंटरेस्ट के साथ मैं इसमें बिलीव करता हूँ. सो लेट मी अश्योर यू कि जो ये इस वक्त एक है ना जी कि जी वो पैसे एवरीबॉडी सिंस वी आर ऑल प्रोफेशनल यू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल हमारा अकाउंट होता है. हम अगले साल प्रोजेक्शन होती है हमारी एक्सपोर्ट कितनी होंगी, हमारी इम्पोर्ट्स कितनी होगी, हमारी रेमिटेंसेस कितनी होगी. देन हाउ वुड वी अगर खुदा न खासा उसमें बिग गैप हो देन ऑब्वियसली मैटर ऑफ वरी बिकॉज हाउ वुड यू फिल दैट गैप. Now this has been the debate ongoing or markets are nervous for no reason. Let me tell you कि आज अगले साल जो करंट चल रहा है फिस्कल ईयर इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है इज अबाउट 32 to 34 बिलियन डॉलर्स. 22 बिलियन की आपकी मल्टीलैटरल लायबिलिटीज ड्यू होनी है. रफली 12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो ट्रेड प्लस रेमिटेंसेस माइनस करके वो है 34. इज इट समथिंग ह्यूज एंड spontaneous that no government can do it? Yes, we can do it. Why not? We have did it in fiscal year 2016-17. Look at the numbers. We did it about 35, roughly the same amount. उस वक्त इसलिए चाहिए था because we were setting up, this LNG plants. We were setting up the, energy generation plants. 18 घंटे की लोड शेडिंग शायद आप भूल गए हो 2013 में. और हमने वादा किया था हम ये लोड शेडिंग को खत्म करके जाएंगे. वी कंप्लीटेड इट एंड वी डिड इट बट इट रिक्वायर्ड मनी. इफ यू वांटेड टू स्टे इन द स्टोन एज फाइन देन 32 बिलियन की जरूरत नहीं थी, फिर शायद 20 बिलियन से काम चल जाता. नहीं, चैलेंज लेना पड़ता है जी, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और ली हमने. वी सक्सेसफुली परफॉर्म्ड एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड. क्या हमने ज़र्ब अज़म नहीं लड़ी, क्या हमने रद्दुल फसाद नहीं लड़ा, क्या हमने फाइनेंस नहीं किया. इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर फाइनेंसिंग. वी डिडंट आस्क फॉर बैगिंग बॉल लेके हमें पैसे दे दुनिया. ये तो दुनिया की जंग थी. लेकिन आपको ऑनरेबल नेशन
और दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में इज्जत डिग्निटी के साथ अगर बैठा तो ये काम हमें फिर करने पड़ेंगे, ये चैलेंज कबूल करने पड़ेंगे, हमने किए। एंड बहरहाल एज ए सेट कि कोई मैं मार्केट्स को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आपको पैगाम दे रहा हूँ कि कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वी आर बैक इन बिजनेस, इंशाल्लाह वी विल अरेंज एवरीथिंग, नथिंग इज टू वरी, पाकिस्तान विल बी फाइन। ठीक हो, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। ये भी यही चीज़ें हमने सुनी हुई है 2013 में भी और पहले भी 98-99 में भी सुनी हुई है। तो मुझे तो वैसे उस वक्त लाया जाता है जब बिल्कुल वो कहते हैं पट्ठा बैठा होता है, जो पंजाबी जो हम कहते हैं, जो बिल्कुल तबाही हुई होती। तो मैं अल्लाह का फजल है 98-99, आई एम नॉट टॉकिंग रेटोरिक, आई एम टॉकिंग विद डिलीवरी। 98-99 आपके सामने है, पाकिस्तान वाज हैड टू फेस द वर्स्ट सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद होगा जब हमने एटमी धमाके किए, ऑब्वियसली दे वांटेड टू पनिश अस, लेकिन अल्लाह का फजल है मैं उस वक्त फर्स्ट डे से फरवरी 97 से आई वाज ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, सम टाइम मेरी इंडस्ट्री भी थी। लेकिन जब वो हालत हुई तो फिर मुझे 6 नवंबर 1998 को ये जिम्मेदारी दी गई। रुपी हैड गॉन टू 69 रुपीज इन द मिड डे और क्लोज 67 होता, उस जमाने में हाईएस्ट था। और इसी नेशनल असम्बली में तकरीरें हो रही थी कि ये दिसंबर 98 में 100 रुपए का होगा, चाहे 14 तकरीरें पढ़ें आप। तो बात यह कि वही पाकिस्तान है। हम अगर अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी पूरी एफर्ट करें, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं और कामयाबी मिलती है और मिली है। इसी तरह 2013-14 में मैंने आपको स्टोरी सुना दी। तो बात यह थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह पे भरोसा करके एंड आई एम डूइंग आई डोंट बिलीव इन डूइंग वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली। आई बिलीव इन कवरिंग द एंटायर ईयर, फिस्कल ईयर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी कि हम उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। मैनेज माजी में करके दिखाया है, मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान ठीक होगा अल्लाह के फजल करम से, पाकिस्तान को ठीक हो सकता है, होना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो सियासत बाद में होती रहेगी। बहुत लोग कहते हैं जी आपने बड़ी गलत काम किया है, आप अगर ना ये यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता। ये बात सही है। द चॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट। रियासत और सियासत, should we care for our political capital, should we care for the country, should we care for 230 million people of Pakistan? That is the difference. ये हमने सोच समझ के किया, कोई इसमें कोई शक नहीं है। आपका ख्याल है ये महंगाई जो है ये 6 महीने की लाई हुई है, ये 4.25 साल की इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस एंड बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। ये चीज़ें ना 6 महीने में आती हैं ना 6 महीने में जाती हैं। सो आवर फोकस इज दैट इस डैमेज, इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रोकें। वो अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। दूसरा ये तक हम इसको डिफ़ॉल्ट से बचाएं, वो हम अल्लाह के फजल से कामयाब हो गए हैं। अभी हमने इसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ लेके जानी है। हमने इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, हमने रुपए को स्टेबल करना है, हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करना है, हमने जीडीपी ग्रोथ को वापस, जो 2% ऑफ प्रोजेक्ट हो चुकी है पाकिस्तान की इनकमिंग बिकॉज ऑफ फ्लड्स ऑल्सो, वो एक नेशनल कैलेमिटी है, नो बडी कैन डू एनीथिंग। तो इन चीज़ों को हमने करना है। मेरी गुजारिश ये है कि आप भी अपना जो रोल है वो अपना वो अदा करें एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी आउट ऑफ इट अल्लाह के फजलो करम से एंड विद आवर कंबाइंड एफर्ट्स आउट ऑफ दिस मैन मेड डिजास्टर। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स, आई हैव बीन बीइंग इंटरव्यूड ऑन यू फोन, क्योंकि मेरी ज़रा इंटरव्यू को ज़्यादा तकलीफ कुछ लोगों को होती थी। सो देयर वाज अ बैन ऑन मी। मेरे साथ तो उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। मुझे आपसे अफसोस है कि आप में से कोई नहीं बोला। ये इशफाक तोला सा मुझे जरूर रब्ता करते थे। यू शुड रेज द वॉइस। डू यू एक्सपेक्ट कि आई हैव नॉट फाइल्ड 20 year टैक्स रिटर्न? व्हाट अ जोक। दिस कैन हैपन ओनली इन पाकिस्तान। 1981 to 2001, this is my case. I didn't file tax return. I never delayed my tax return by 20 minutes. I have been giving extension as this is my fourth term, 3-time finance minister, but I've never availed even that extension because I knew that I'm going to give extension in filing of return. तो आप मेरे साथ ये बात करते हैं तो that person I have no issue, but please मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक अपना हर किस्म की फेजेस आती हैं, बट एवरीबॉडी मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, नेशनल ड्यूटीज और प्रोफेशनल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस, और ये समझ करके अल्लाह ताला को हम सब ने एक दिन जवाब देना है।
तो मैं सिर्फ आपको रीएश्योर कर रहा हूँ कि कोई फिक्र की बात नहीं है। हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई ड्रामे होते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ना पहले 98, 99 में हुआ था, ना 20, 13, 14 में हुआ था। वी गॉड, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहगारों के हाथों फिक्स करवाया था। इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड। मैं आई हैव फेथ। अगर फेथ ना होता तो मैं चौथी दफ़ा मुझे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी। और बहुत लोग कहते हैं कि आप हर दफ़ा जब प्रॉब्लम होती है तो आप लेते हैं, जब ठीक होती है स्काई होता है तो आपकी टांगें खींच दी जाती है। मैं कहा यार मैं क्या करूँ, आई एम पाकिस्तानी, आई लिव इन पाकिस्तान, आई हैव टू फेस दिस बिकॉज दिस इज कल्चर है। तो मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप भी ज़रा मेहरबानी करें, आप अपने थोड़ा सा 10%, 15% टाइम कौम को भी दें, मुल्क को भी दें। यू कैन कम अप विद नंबर ऑफ आइडियाज। ये काउंसिल का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी। आई सी सो मैनी वेरी इंटेलिजेंट, यू आर ऑल इंटेलिजेंट। You would not have been chartered accountant if you were not intelligent. That I know. अपने आप को एक्सक्लूड करके कह रहा हूँ, but it's a very hard, course. People take इंग्लैंड में 8 और 10 साल मेरे साथ जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट 69 में था, वो मुझसे पहले थे, वो स्टिल स्टक थे। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हम सब पे कि हमें बेहतरीन इल्म दिया, हमें एक अच्छी लाइफ दी। वी आर बेटर देन करोड़ों लोगों से। 23 करोड़ में से यू मे बी मे बी 1 or 2% आप फॉलो करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी उसी तरह उतनी ज़्यादा है। बहरहाल आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस रन डाउन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त जो है वो ज़रूर अपने कीमती मशवरे, अच्छे मशवरे देंगे पाकिस्तान को भी, और उसके हवाले से कि क्या अच्छाई हो सकती है, किधर हो सकती है। यू नेवर नो कि किसका अच्छा मशवरा जो विल क्लिक। सो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये हमारा जो एक जिम्मेदारी है वो हमें कलेक्टिवली ज़रूर उसको निभाना भी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट के आई विल कम बैक टू द मेन टॉपिक। आई हैव बीन लिटिल बिट डिरेल्ड, बट आई थिंक देयर वर करंट इश्यूज। आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद दोज with these issues with you people, because you will spread it and people will come to know and there will be clarity. So, ladies and gentlemen, in this age of fast transformation, the accountancy profession is also undergoing a rapid change. To be successful as an accountant today, the traditional skills and competencies of professional accountants have to be complemented by ethics, integrity and recognition of responsibility towards public interest. मैं अभी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सब आपका मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ कर सकते हैं अपने लोगों की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की अपना प्रोग्रेस के लिए, वो हम सब की जिम्मेदारी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स also expected to work closely with the governments and particularly in Pakistan towards the formulation and implementation of sustainable economic and social policies. वो मैंने अर्ज़ की है कि आप मेहरबानी करके वो मुझे भेजें, हम इंशाअल्लाह उसको ना सिर्फ स्टडी करेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा उस पर ऊपर अमल भी करेंगे। सस्टेनेबिलिटी इज़ एन एनवायरमेंटल एंड सोशल ड्राइवर दैट्स नाउ चेंजिंग आवर डे टू डे लाइफ्स in almost every way imaginable. Businesses have to commit to sustainable and environmental friendly practices as climate change becomes more manifest. Ladies and gentlemen, all of you are very well aware of the damages caused by the recent floods in Pakistan. It was a natural catastrophe, and I have been talking in Washington with all the stakeholders. I used to have about 40 meeting हमारा जो delegation जाता था. This time we had record 58 meetings in 4 days. So these are multilateral, these are bilateral, mostly ministers. So we have been explaining there was a round table on Pakistan flood situation. That has been organized by United Kingdom government as well as the World Bank. और उसमें शायद आपने पढ़ा हो कि एक कमेटी बनी थी जो कि इस सारे काम को स्टेयर कर रही थी. इट हैड UNDP, यूरोपियन यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक. और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑब्वियसली असिस्टेड क्योंकि फ्लड तो पाकिस्तान में आए हैं. लेट मी शेयर विद यू दैट द नंबर्स आर वेरी हार्ट ब्रेकिंग. हमारा ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर लैंड मैस इज अंडर वाटर एंड इफेक्टेड बाय दीज फ्लड्स. अवर ऑलमोस्ट लेस देन 2000 पीपल उनको जामे शहादत हो गई, उसमें लेडीज़ और बच्चे भी हैं. करीबन 2 मिलियन आज तो फिगर जो दिया NDM में 2 मिलियन से भी क्रॉस कर गया. 2 मिलियन हाउसेज हैव बीन आइदर डैमेज और वॉश्ड अवे.
तो हमने नहीं, हमारा अपनी एस्टिमेट था बिफोर इवेंट इज अबाउट 25 to 30 billion. On the day of this round table in World Bank in Washington, they were supposed to, this committee जो professionals की है, they were supposed to give the initial numbers of the losses and the needs Pakistan would have to deal with this catastrophe. उन्होंने लॉसेज जो गिनवाए हैं उस दिन, आई वाज टू कंक्लूड दैट मीटिंग, आई वाज को चेयरिंग, तो उस पर यह था कि जो उन्होंने लॉसेज गिनवाए हैं दैट इज 32 पॉइंट, वेरी क्लोज टू आवर एस्टिमेट, $32.4 billion पाकिस्तान के लॉसेज जो हैं इस फ्लड की वजह से। और मिनिमम नीड जो है, दिस इज अ वेरी इनिशियल प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एज पर दिस renowned committee of the 4 members is $16.2 billion. So see, we have to work around this. It is a national duty to deal with the you see, जो immediate response है वो तो गवर्नमेंट कर रही है, उसमें करीबन 50 बिलियन तो कैश डिसबर्समेंट हुई है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट वे इन थ्रू दिस इनकम सपोर्ट फंड, डाटा भी है, नादरा है, विमेन को मिलता है, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ ये सारी कैटास्ट्रोफी हुई उन लेडीज़ को, तो वो जितना है, जाने से पहले कुछ शुरू में जब मैंने लिया तो विद इन फर्स्ट 2-3 days मुझे पता चला कि कुछ कंप्लेंट्स है, तो हेल्ड अ मीटिंग विद गवर्नर ऑन जूम मीटिंग with the governor state bank and the agent जो बैंक था, I think it was a B bank and all the other stakeholders. So उसका फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि करीबन 98% जो है वो डिस्बर्समेंट हो चुकी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ज़ाहिर है कि अगर किसी इस तकलीफ में है तो उनको अब चाहिए, आप महीने बाद देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऑलमोस्ट 49 बिलियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस थ्रू प्रोविंसेस एंड स्पेशल disbursement, वो भी फाइनेंस डिस्पाइट ऑल दिस टाइट पोजीशन एंड लेगेसी ऑफ द पास्ट जो उनको मिली है, उसके बाद जो हमने वो भी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ फ्लड इफेक्टीज। बट इन द लॉन्ग रन you have to deal with the reconstruction, rehabilitation. That's a real phase, and that has to be resilient infrastructure. खुदा ना खास्ता ये दोबारा आए तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि ये नहीं कि घर हो जाएं, जैसे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बहा है उस इतनी। अब प्रॉब्लम ये है कि वी ओनली, हमारी इमिशन जो है वो करीबन 0.6% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस, एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट 10 vulnerable countries in the world. अल्लाह करे कि किसी के साथ ये ना हो जो हमारे साथ हुआ। हम ये नहीं चाहते कि जी 10 हैं तो 10 में हो, किसी में भी ना हो। अल्लाह पाकिस्तान को भी महफूज रखें, बट वी हैव टू प्रिपेयर ourselves. This we have experienced, and such a huge losses to the national national जो मैटर है, और जो एक नया चैलेंज बन गया है, जो इकोनॉमी का चैलेंज चल ही रहा था, ये एक I would say it has compounded the problems of the challenges of the current government. But inshallah, as I said, we are dealing with it. So let me assure you that the government again is dealing with this, the top priority. I had multiple meetings with the multilaterals there, and government of France has offered to hold a donors conference in Paris sometime next month. Prime Minister साहब उसको खुद लीड करेंगे। तो हम I mean we are not seeking, or we are not asking, or we are not, I don't want to use the word begging, but we are obviously, everybody knows what has happened. Everybody knows हमारा कितना कसूर है. Everybody knows. So I think the gracious and the generous support would be welcome. Would be, we will always remember कि जी हमारे ऊपर मुश्किल आई थी जो कि हमारी तो कॉज नहीं थी, लेकिन the world community rose to the occasion and help Pakistan. So let's see. I'm very sure, inshallah, God willing, इसमें UN Secretary General का बड़ा रोल होगा, वो भी करना चाहते थे। French President was very generous to offer this thing. So they will combine, most likely hold this conference, and we are right now working on the detail next month. I would also request all participants to go through the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the underlying 17 Sustainable Development Goals. These are very important. And आप नेट पे मिल जाएंगे। पाकिस्तान frankly is lagging behind a lot. इसमें जो February 16 में जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा बना था, उस पे the progress has been very slow. We were supposed to meet these goals
because this is a global responsibility of Pakistan, but good for us as well as a country. क्योंकि अगर होगा तो हम भी उससे benefit करेंगे, but it is a global challenge, and there's all the emphasis by all global institutions like United Nations, the Commonwealth, your multilateral donors, World Bank, IMF, etc., etc. So I think आप भी देखें, अगर टाइम मिले देखें कि वो गोल जो 17 हैं उसको हमने कैसे हैंडल करना. Ladies and gentlemen, on the whole, I'm confident that the fruitful discussions have taken place in the earlier sessions of this conference regarding the further needs in sustainability, reporting and technology, which will impact not only the accountancy profession, but the business, trade and industry as a whole. I'm sure the learning from this conference of today will help my fellow colleagues and friends and the participants to perform their jobs in a better and befitting manner. I was happy to see the feeling and the assessment here in the house, also from Lahore and Karachi. So I'm grateful that seems satisfactory. Unless को तोला साहब ने को plan करके rhetoric किया तो मुझे नहीं पता. One is I'm not suspecting he's a great friend and a great performer, and I think you are lucky to have a president like him, and I hope many more would come. मैं यहाँ अपने को पुराने colleagues भी देख रहा हूँ who have served in the council. So lastly, I would like to acknowledge the commendable contributions of Mr. Ishaq Tola, Mr. Muhammad Maqbool Saab, Mr. Muhammad Saifullah and Mr. Hasnan Badami, and the entire management staff of ICAP who have very successfully organized this conference. My compliments to you. Please don't let us wait for next 18 years to have the next conference. Try to make it 18 weeks if possible, but maximum 18 months. So with these words, and from the core of my heart, I'm most grateful for your patient listening and bearing me maybe ups and downs, but you're very gracious. Thank you so much, and God bless you all. आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ऑल पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे.